Yes, students, in this session we have discussed LC series AC circuit. LC series AC circuit means such a AC circuit in which inductance capital L and capacitance C connect in series. So look, let us consider a coil having inductance capital L and capacitor having capacitance C connect in series and across this combination AC source is connected. This is the symbol of AC source which gives the AC voltage root mean square value of AC voltage V. Now if we draw the phasor diagram for LC circuit is, so look, in the LC circuit, look, in series current remains same. So if total current is I, then inductance current is I, and in capacitor current is also I. Current remains same in inductance and capacitance. So phasor diagram means representation of voltage and current in the form of vector notation. So that is the vector form of current I. The length of arrow gives the magnitude. If magnitude of current is I, then the length of that arrow gives the magnitude of current I. That I is the root mean square value of AC, and that is the direction. In the inductor, voltage leads the current by phase angle 90 degree, or current lag behind the voltage by phase angle 90 degree. So look, that is the vector form of voltage across the inductor, and this angle is 90 degree. Is now voltage across the capacitor is VC. In the capacitor, voltage lag behind the current by phase angle 90 degree is, or we can say current leads the voltage by phase angle 90 degree. So this is the direction of voltage. This is the vector form of voltage across the capacitor. Is voltage across the capacitor have magnitude VC. So that length will represent VC, and that length represent the voltage across the inductor, which is VL. So that length is equal to VL. Now we assume that voltage across the inductor is more than the voltage across capacitor. So look, these two, there is two voltage. Total voltage is V. Some part of voltage develop across the inductor, which is VL, and remaining part of voltage develop across the capacitor, which is VC, and both are in the opposite direction. The sum of these voltage is equal to net voltage, because this voltage divided into two parts, VL and VC. When we sum up these voltage, then we get the net voltage V. Now we want to add these two vector quantities, these two voltages. In the 11th class, we have studied that when two vector quantities lies in opposite direction, then resultant is obtained by the subtraction of vector quantity. So VL is greater than VC. That's why net voltage is V equal to VL minus VC, and VL is greater than VC. That's why net voltage represented in the direction of VL. The length of that arrow gives the is equal to VL minus VC. So net voltage V equal to VL minus VC. The length of that arrow gives the value of V, which is equal to VL minus VC. Now if VC is greater than VL, then length of arrow VC is bigger than the length of arrow is VL. Then yes, then we obtain, then the arrow will be in downward of V, then voltage will be equal to VC minus VL. Look, this if is, in this case VL is greater than VC, and if VC is greater than VL,
is if BC is greater than VL, then net voltage, then look the diagram of phasor diagram, that is the direction of voltage across the inductor VL, and that is the vector form of current. Now BC is greater than VL, so length of arrow of BC is bigger than the length of arrow of voltage across the inductor. Yes. Now BC is greater than VL, two vector quantity lies in opposite direction, then net voltage will be lies in this direction. Yes, this is equal to BC, V equal to BC minus VL. So there is two phasor diagram. First, when if voltage across the inductor is more than the voltage across capacitor, then net voltage VL, V equal to VL minus BC shown in that manner, and length of VL is bigger than the BC. Now if voltage across capacitor is more than the voltage across inductor, then length of voltage across the capacitor is bigger than the length of voltage across the inductor. Yes, length of voltage across the inductor. So look, that length, the arrow of that length represent the voltage across capacitor, and that length of arrow gives the voltage across, that length represent the voltage across inductor VL, and that BC. Now BC is bigger than the VL, that's why net voltage V is equal to BC minus VL. Yes. Now in the LC circuit, this is the phasor diagram when VL greater than BC, and that is the phasor diagram when BC greater than VL. Now in the LC circuit, if VL greater than BC, then net voltage V equal to VL minus BC. This is the equation 1. And put, if current is I, then put VL equal to I into XL. As we discussed in the previous term, XL is the inductive reactance, I is the current. So net voltage across the inductor is equal to VL equal to I into XL. And net voltage across the capacitor VC equal to I into XC. Yes, X is the capacitive reactance which is behave like a resistance in the capacitor. X capacitive reactance behave like a resistance in capacitor, and inductive reactance behave like a resistance in inductor. So according to Ohm's law, V equal to IR, that's why VL equal to IXL and VC equal to IXC. Put these values in equation 1, put these values, then V equal to IXL minus IXC. So V upon I equal to XL minus XC. This is the equation 2. Put V upon I. V upon I can be represented by the symbol capital Z or X. So Z, where Z is the impedance or X is the capacitive reactance. So Z or X equal to XL minus XC. XL minus XC can be, XL minus XC is it can be known as impedance, and XL minus XC can be known as net reactance of the circuit, because here XL is the inductive reactance, XC is the capacitive reactance. So difference between these two reactance gives the value of net reactance. And the phase difference between voltage and current, look, the angle between net voltage and current is 90 degree. So phase angle between is phase difference between voltage and current. Phase difference between voltage and current phi equal to 90 degree. Yes, here phase difference between voltage and current is 90 degree for
when BL greater than BC. Now if BC is greater than BL, then what is the net voltage? is तो देखो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं LC सीरीज AC सर्किट. LC series AC circuit means such a AC circuit in which inductance and capacitance connect in series. Inductor have inductance L, एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है, कैपेसिटेंस C है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, उनके अक्रॉस नेट वोल्टेज V अप्लाई की. तो बच्चों ये V वोल्टेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. एक पार्ट तो इंडक्टर के क्रॉस डेवलप हो जाएगा और एक पार्ट कैपेसिटर के क्रॉस डेवलप हो जाएगा. इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो VL है और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है VC है. सीरीज में करंट सेम रहता है. यदि AC टोटल करंट I दे रहा है तो इसमें भी करंट I रहेगा, इसमें भी करंट I रहेगा, कैपेसिटर में भी. ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिए ये अब हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं तब जब BL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. तो देखो बच्चों ये है करंट की डायरेक्शन, ये करंट की वेक्टर फॉर्म है. करंट I है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ I है. इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री आगे होती है तो ये इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री आगे है और कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग बिहाइंड होती है तो BC हो गई डाउनवर्ड लैग बिहाइंड शो करता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ BC. अब देखिए BL बड़ा है, BL ज्यादा है तो BL के एरो की लेंथ लॉन्गर है BC के कंपेयर में. जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो नेट वैल्यू निकालते हैं सबस्ट्रैक्ट करके. क्योंकि BL बड़ा है इसलिए नेट वोल्टेज जो V होगी, नेट वोल्टेज क्या है, इन दोनों ये जो दो वोल्टेज इन दोनों में डेवलप हो रहे हैं, V का एक पार्ट BL और BC. BL इंडक्टर के क्रॉस है, BC कैपेसिटर के क्रॉस है. लेकिन ये दोनों वोल्टेज किसने कहां से आएंगे, नेट वोल्टेज V से दो पार्ट में डिवाइड हुई है तो इन दोनों का सम करेंगे तो नेट वोल्टेज V मिलेगी. सम किसके इक्वल है, VL माइनस BC जो कि नेट वोल्टेज V बताता है. अब देखिए नेट वोल्टेज V इक्वल टू VL माइनस BC. VL को लिख सकते हैं I इंटू XL, BC को I इंटू XC. पुट कर दिया, I कॉमन लिया, V अपॉन I को लिख सकते हैं Z और X. तो Z और X, Z क्या है, Z इंपीडेंस, Z से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं V अपॉन I को इस समय और X से भी. Z बताता है इंपीडेंस और X रिएक्टेंस. इंपीडेंस की बात करें तो XL माइनस XC है और रिएक्टेंस की बात करें तो XL माइनस XC के इक्वल है. रिएक्टेंस नेट रिएक्टेंस क्यों है, क्योंकि XL इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है. इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा नेट रिएक्टेंस X. और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट देखें तो बच्चों ये करंट की डायरेक्शन, ये है नेट वोल्टेज डायरेक्शन. दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90. सो फेज डिफरेंस phi इक्वल टू 90 डिग्री. अब yes, now if BC is greater than BL, then what is the net voltage? Look, yes, now if BC is greater than BL, BC is greater than BL, then look, yes, then net voltage V equal to BC minus BL. Yes, equation 1. When BL is greater than BC, then net voltage is equal to VL minus BC. But here, in this condition, VC is greater than VL. That's why net voltage is equal to VC minus VL. Put in equation 1, BC equal to I into XL and VL equal to BC equal to I into XC and VL equal to I into XL. So net voltage V equal to BC, V equal to I into XC minus I into XL. So V upon I equal to XC minus XL. Yes, that is the equation 2. Put in equation 2 is V upon I equal to Z or X. Then X or Z, or we can write Z or X equal to XC minus XL. Yes,
That is the equation 3. Where Z impedance is equal to Xc minus XL and net X is the net reactance also equal to Xc minus XL. And what is the phase difference between voltage and current? So look, BC, yes, look, what is the phase difference? Direction of net voltage is phase difference between voltage and current. Direction of voltage is this and direction of current is this. Then what is the angle between net voltage and current is 90 degree. So phase difference between voltage and current phi equal to 90 degree. Yes, but what is the here phase difference is also 90. Here phase difference is also 90. But what is the difference? What is the look here? Voltage leads the current by phase angle 90 degree when VL greater than VC. But here when VC is greater than VL, then here net voltage lag behind the current by phase angle 90 degree. Yes. So देखो बच्चों, यदि ऐसे सर्किट में VC greater than VL है तो देखिए VC greater than VL है तो नेट वोल्टेज V इसके इक्वल है VC minus VL का. VC minus VL, VC को I into XC, VL को I into XL पुट किया, I कॉमन लिया तो V upon I इक्वल टू XC minus XL. इक्वेशन 2 में V upon I को पुट किया Z और X XC minus XL. Z इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस भी XC minus XL के इक्वल है और रिएक्टेंस भी नेट रिएक्टेंस भी XC minus XL के इक्वल है. और फेज डिफरेंस देखिए, ये वोल्टेज की डायरेक्शन है करंट की, कितना एंगल बन रहा है 90. तो फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 90 डिग्री. देखिए यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90, लेकिन दोनों 90 में डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस में देखिए इस डायग्राम में जो VL ग्रेटर देन VC है तो नेट वोल्टेज लीड करती है करंट से 90 डिग्री पे. और इस सर्किट में जब VC ग्रेटर देन VL है तो वोल्टेज लैग बिहाइंड है करंट से 90 डिग्री पे. Yes, now graph between frequency of AC and impedance. Look graph. Yes, so graph, we want to plot the graph between impedance and frequency of AC source. So look, formula of impedance Z equal to XL minus XC. XL को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा L. और XC को लिख सकते हैं 1 upon ओमेगा C. और ओमेगा होता है 2 पाई F, तो इसे लिख सकते हैं 2 पाई FL और इसे 2 पाई F. That can be written as 2 pi FC in place of omega. So look, here frequency 0. When frequency 0, then what is the value of impedance? Look, impedance when F0, put F0 here. When we put F0, that value becomes 0, but that value become infinite. So 1 upon F0, then 1 upon 0, infinite. So 0 minus infinity, impedance become infinity. So when frequency 0 is impedance is infinite. Now look, when F is 0, look, that is the XL, that is the XC. XL is 0 and XC is infinite. So difference between them is infinite. Now when frequency start to increase, this value start to increase and that value start to decrease, because that is inversely proportional, that is directly proportional. So frequency, then XL start to increase and XC start to decrease when frequency decrease. That's why difference between XL and XC decrease. So impedance will be also decrease. When XL become equal to XC at a particular frequency, XL and XC become equal. Then at a particular, when frequency increase, this value XL is increase and XC decrease. At a particular frequency, XL become equal to XC, then impedance become 0. XL and XC when equal, that is 3, that is also 3 minus 3 0. That's why impedance become 0. Now when further frequency increase, then
XL continuously increase and XC decrease. That's why difference again start to increase. So frequency impedance start to increase. So what is the graph? Graph will be obtained in such a manner. First of all, decrease. Look when current is 0, impedance is maximum, and when at a particular frequency impedance become 0, and then again impedance start to increase. That frequency we will discuss further. That is the particular frequency that is known as resonant frequency. Now if we plot the graph, देखो बच्चों, हम impedance LC सर्किट के लिए impedance और frequency of AC सोर्स के बीच में ग्राफ बना रहे हैं. तो इस फार्मूले की हेल्प लेते हैं. Z इक्वल टू XL माइनस XC. XL को 2 पाई FL लिख दिया और XC को 1/2 पाई FC लिख दिया. अब देखो, जब F 0 है तो ये वैल्यू 0 हो गई और ये वैल्यू इनफाइनाइट हो गई. तो देखिए, एक वैल्यू 0, ये XL समझ लीजिए, इसे XC, एक वैल्यू 0, एक वैल्यू इनफाइनाइट है. तो इनके बीच का डिफरेंस भी कितना होगा? इनफाइनाइट. और इन दोनों का डिफरेंस बताता है इंपीडेंस. तो इंपीडेंस इनफाइनाइट है. तो देखिए, इंपीडेंस इनफाइनाइट. अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे. जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली. तो देखिए, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है. तो इनके बीच का डिफरेंस भी डिक्रीज हो रहा है. डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है तो इंपीडेंस डिक्रीज हो रही है. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे XL और XC इक्वल हो गए. जब इक्वल हो गए तो इन दोनों का डिफरेंस 0 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस 0 हो गई. इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं. उसके बाद जब हमने एक फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई तो XL कंटिन्यूसली बढ़ता रहा और XC घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो इनके बीच का डिफरेंस फिर बढ़ना शुरू हुआ, तो इंपीडेंस बढ़नी शुरू हुई. तो ये ग्राफ है इंपीडेंस और करंट के बीच का. अब यदि हम ग्राफ बनाएं, नाउ इफ वी प्लॉट द ग्राफ, for voltage, current and frequency. If we plot the graph for current and frequency of AC source. So look, current I equal to V upon Z. That is the formula of current I equal to V upon Z. Look, V upon I equal to Z we put. That's why I equal to V upon Z. So according to that formula, look, that graph help to plot that graph. Look, when frequency 0, Z is infinite. When Z is infinite, current become 0. Now when frequency increase, Z decrease. When Z decrease, impedance, current will be increase. So look, and when this frequency Z become 0, when Z 0, then current become infinite. That's why first of all current increase, and at a particular frequency current become infinite. At F0 frequency current become infinite. Now when frequency further increase, Z start to increase. When Z increase, current will be decrease. That's why current start to decrease. And when frequency become infinity, then current become 0. That frequency at which impedance current become maximum, current become infinite, we can say that frequency is F0. तो देखो बच्चों, अब हम LC सर्किट के लिए करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बना रहे हैं. तो इस ग्राफ को बनाने के लिए ये ग्राफ हेल्प करेगा हमारी, और साथ में फॉर्मूला हेल्प करेगा I इक्वल टू V अपॉन Z. तो देखो, जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो Z की वैल्यू इनफाइनाइट है. देखिए, Z की वैल्यू इनफाइनाइट है. लेकिन जब Z इनफाइनाइट है तो करंट 0, क्योंकि V अपॉन इन्फिनिटी 0. तो देखिए, करंट 0 है. अब देखिए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, Z की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. जब Z डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा. तो देखिए, करंट इंक्रीज हो रहा है. इस फ्रीक्वेंसी पे Z की वैल्यू 0 हो गई. जब Z की वैल्यू 0 हो गई तो I की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी. V अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो I की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई. उसके बाद जब फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी कहते हैं F0. ये F0 फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट इनफाइनाइट हो गया, करंट बिकम इन्फिनिटी. करंट इन्फिनिटी हो गया. उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इसके बाद जब हमने फ्रीक्वेंसी फर्दर इंक्रीज की तो देखिए, Z इंक्रीज हो रहा है. जब Z इंक्रीज होगा तो I डिक्रीज होगा. देखिए, I डिक्रीज हो रहा है. और जब फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी हो जाएगी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये वैल्यू 0 हो गई.
और ये वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो जेड की वैल्यू फिर इनफाइनाइट हो जाएगी। जब जेड इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट जीरो। तो फ्रीक्वेंसी एफ, जब एफ इंफिनिटी होगा तब करंट जीरो होगा। तो एफ बताता है, एफ इज आई करंट है, आई करंट है और एफ फ्रीक्वेंसी। ये करंट और फ्रीक्वेंसी ग्राफ है एंड ये जेड और एफ इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी। दिस so we plot the graph. Z is the impedance, F is the frequency of AC. So that is the graph between impedance and frequency of AC for LC circuit. These graph only applicable for LC series AC circuit. And when this graph is plot between current and frequency, I current and F frequency, it's these two graphs we plot for LC circuit. These graph only plot applicable for LC series AC circuit. So students, in this session we have discussed LC series AC circuit. In next session we will discuss LCR series AC circuit. Thank you.